Assalamu alaikum students. Today we are going to cover book page 47, 48, 49 till the first paragraph of page 50. We will be discussing Pak-Britain relations and Pakistan, the European Union relations. Let's come to the main points of these topics. First of all, let's start with Pak-Britain relations. Dear students, as you all know that before 1947, Pakistan and India were the colony of Britain. In the post-World War II era, the colonization all finished and the era of nationalism started. In this time period, Britain and other European countries could not hold their colonies and had to make them independent. With the efforts of Quaid-e-Azam, Pakistan got its independence. Otherwise, Britain would have left this area quarreling with each other and only a single state, India, and as many as 635 independent states with Rajas and Maharajas quarreling with each other, just like they did in Africa, where there were no big leaders, where there were no great leaders, and that is why they left all Africa in the hands of different dictators and fighting retaliations of that area. If you look at the map of Africa, it's all haphazard. But if you look at the map of Pakistan and India, especially Pakistan, it's a very beautiful map. अब देखते हैं कि क्या वो मुल्क जिससे हम आज़ाद हुए हैं, क्या हम उससे दोस्ती कर सकते हैं? आप देखिए कि जब आप कोई से दो स्टूडेंट्स या दो लोग आपस में लड़ाई करते हैं तो कितने अरसे तक एक दूसरे को देखने को दिल नहीं करता. लेकिन इंटरनेशनल डीलिंग्स विद डिफरेंट कंट्रीज़ ये बहुत अलग होती हैं. वो दुश्मन जो एक दिन आपका बहुत खूनी दुश्मन होता है, अगले ही दिन आपकी अपनी नेशनल इंटरेस्ट की वजह से आपका जिगरी दोस्त बन जाता है. आपने उर्दू में पढ़ा होगा बगल में छुरी मुंह में राम राम. फिर आपको मैंने जनरल अयूब का सेंटेंस बताया that there are no friends or foe in the international diplomacy, just national interest. इन्हीं बातों पर अमल देखते हैं आज कि ब्रिटेन के साथ रिलेशनशिप में हमने कैसे इसको फॉलो किया. ब्रिटेन के साथ हमारे रिलेशनशिप को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें तो इकोनॉमिक सपोर्ट, tours of the head of the states, military relations because of the 9/11 attacks, earthquake of Pakistan, कश्मीर इशू. ये मेन पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हमारा आज का टॉपिक रोटेट करेगा. तो ज़रा छोटे टॉपिक्स को ईयर वाइज हम करेंगे और छोटे टॉपिक्स को पहले कर लेंगे. On 14th August 1947, Pakistan got independence from the Britain, not from India, but from Britain. Britain, as it gave us independence, so accepted us the existence of Pakistan immediately. As we became independent, we became the part of Commonwealth in 1947. Britain added us in the Commonwealth, but in 1972, after the eastern part of Pakistan got separated from us and became an independent country with the name Bangladesh, Bhutto blamed Commonwealth of no good, so got the participation in the Commonwealth, it was discontinued. But in 1989, in the leadership of Benazir Bhutto, we got the membership of Commonwealth again, in spite
the Indian opposition. सेंटो को अभी डिस्कस नहीं करेंगे, हालांकि उसका ईयर 1955 बनता है, लेकिन इसको मिलिट्री रिलेशंस में शेयर करूंगी मैं. अब हम आ जाते हैं इकोनॉमिक सपोर्ट फॉर पाकिस्तान. देखिए, ब्रिटेन ने हमें आज़ाद किया, उस टाइम पे हमें जो पैसा हमारा बनता था वो हमें दे दिया गया, और इंडिया और हमारी आपस की फ़ाइट थी कि जो हमें सही से पैसा ना मिला, अदरवाइज़ ब्रिटेन हमारे लिए डिस्ट्रीब्यूट कर गया था कि जी ये इनको इतना पैसा दे दिया जाए. आफ्टर बिकमिंग इंडिपेंडेंट फॉर मैनी ईयर्स आवर रिलेशनशिप्स आर नॉट शेयर्ड ओवर हेयर. वाई? Because from 1947 to 1956 we were technically part of Britain because we did not have any constitution of our own. So once we made our constitution in 1956 तो हमारी diplomatic relations भी इसके बाद ज़्यादा strong होंगी, क्योंकि हम true solely wholly इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाएंगे जब हमारा कानून बन जाएगा. सो इन 1959 इकोनॉमिक सपोर्ट के तौर पर पाकिस्तान को क्या दिया गया? 13 करोड़ रुपीज़ वर गिवन टू पाकिस्तान फॉर इकोनॉमिक सपोर्ट. एक्सपेंडिचर बियरिंग in 1961 फॉर इंडस वाटर ट्रीटी. इंडस वाटर ट्रीटी सिंतास मुआहिदा उर्दू में कहलाता है, और 1960 में ये हुआ था. वर्ल्ड बैंक ने इसे ब्रोकर किया था, और इसके ज़रिए से कई डैम्स, बराजेस और लिंक कैनाल्स और हेडवर्क्स बनाने थे, जिनकी मदद से पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों को पानी प्रोवाइड करना था. ऐसे में बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी. तो इस टाइम पर ब्रिटेन, हमारे पुराने आका ने ये हमारे लिए वॉलंटियर किया कि वो भी इस डील में शामिल होंगे, और हमें 1961 में उन्होंने बहुत सारा एक्सपेंडिचर, हमारा जो ख़र्चा था वो उठाने की, इसके ऊपर वो उन्होंने ज़िम्मेदारी ले ली. Dear students, previously I have also told you in my previous lecture that Pakistan is a poor country, and it was poorer before. So we did not make yearly plans, we made 5 yearly plans. 5 साल में मुकम्मल होगा जो भी हम प्रोजेक्ट तैयार करेंगे. So in our second 5 yearly plan we got 45.5 crore rupees to help accomplish our 5-year plan targets. In 1961 4 crore rupees were given for railway wagons. रेल का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए हमें पैसे दिए गए. अच्छा जी, another 9 plus 13 crore rupees were given to us for the support to buy ship, power station, houses in Hyderabad and buses. Again in 1963 13 crore were given to us for investment and industrial loans. Again in 1966 very soft condition loans were given to us, and the amount was 40 lakh pounds. Now crore rupees and pounds is different. Other currencies are rupees, but here it is pound sterling. काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी रुपये बन जाते हैं. So all this was given to us for economic support, हमारी मईशत को बेहतर करने के लिए, हमारे मुल्क को स्ट्रॉन्ग करने के लिए. टूर्स ऑफ द हेड ऑफ़ द स्टेट. कोई भी दो मुल्कों के जब डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं तो उनके हेड्स ऑफ द स्टेट एक दूसरे से मुलाकातें करते हैं. आपकी किताब सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के वहाँ इंग्लैंड के अंदर जो विज़िट्स हैं उनके ऊपर ध्यान दे रहा है, और उनको हम शेयर करेंगे. 1987 मोहम्मद खान जुनेजो विजिटेड ब्रिटेन एंड इन्वाइटेड द ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट्स टू invest in Pakistan, and also confirmed their security and peaceful environment for their business to uplift. यानी कि पाकिस्तान आए, आके यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करें, आपको हम पूरी सिक्योरिटी देंगे, और आपकी इस इन्वेस्टमेंट से पाकिस्तान की हुकूमत को फ़ायदा होगा. In 1989 बेनज़ीर भुट्टो, the first prime minister, female prime minister of Pakistan, did a week-long visit to Britain. और ऊपर देखिए 1989 में ही कॉमनवेल्थ की दोबारा मेंबरशिप भी लेंगे. तो ये जो विज़िट थी इसमें ये काम भी हुआ. 2003 जनरल मुशर्रफ मेट with Tony Blair in England and discussed the matters of mutual interest. In 2005 Commonwealth meeting was held in Malta. माल्टा में हुई थी, और शौकत अजीज़ ने इसको अटेंड किया, और पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट के ऊपर लोगों को
وہاں کے اندر جو کنٹریز آئے تھے وہاں ان کو انکریج کیا کہ وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں. 2010 زرداری وزٹڈ انگلینڈ, میٹ کیمرون اینڈ نیچرل انٹرسٹ ایشوز ور ڈسکسڈ. 2014 نواز شریف وزٹڈ یو کے. اب نواز شریف کا نام کتاب کے نئے ایڈیشن میں سے نکال دیا گیا. جو پرانا ایڈیشن تھا اس میں جگہ جگہ نواز شریف تھا. اب جو نیا ایڈیشن ہے اس میں سے نواز شریف کو ہٹا دیا گیا ہے اور کئی جگہوں پر پرائم منسٹر عمران خان کا نام ڈال دیا گیا. سو یہ اٹس آل اسٹوڈنٹس پالیٹکس. پتہ ہونا چاہیے کہ اچھا جی 2014 میں کون گیا, اچھا جی 2018 میں کون گیا, اچھا جی 1989 میں کون گیا, بیکاز وی آر اسٹڈنگ آل ہسٹری آف پاکستان. سو ہمیں ان کے ناموں سے کوئی کنسرن نہیں ہے, جو نام ہوگا وہ ہم لکھ دیں گے. سو نواز شریف وزٹڈ یو کے اینڈ ڈسکس دا میوچل انٹرسٹ ایکٹیویٹیز اینڈ انویسٹمنٹ پروگرامس. 2018 کامن ویلتھ کی میٹنگ ہوئی جو پرائم منسٹر نے وزٹ کیا یو کے, اور وہاں پر پبلک کو, وہاں پہ جو لوگ اٹینڈ کر رہے تھے ان کو انکریج کیا کہ وہ پاکستان کے اندر آ کر انویسٹمنٹ کریں. نیکسٹ, پاک یو کے ریلیشنز after the 9/11 attacks. Dear students, as you all know that the 9/11 attacks all changed the world scenario. کس سے دوستی کرنی ہے, کس سے دشمنی کرنی ہے, یہ سب کچھ چینج ہو گیا. میں نے پاک افغان ریلیشنز کے اندر کافی اور پاک امریکہ ریلیشنز میں 9/11 اٹیک کو کافی ڈیٹیل سے آپ کو بتایا ہے. Here in after the 9/11 attack we became the ally of America and England, and in 2002 the cooperation with England started on a very heavy ground against terrorism and ایکسٹریمزم. کوآپریشن شروع کر دے گی, اور آپ کو پتہ ہے کوآپریشن سب سے پہلے کیا ہوتی ہے, ڈپلومیٹک کوآپریشن ہوتی ہے کہ ہم اپنا بیان دیتے ہیں. سیکنڈ کوآپریشن از دی ود دی ہیلپ آف اکنامک سپورٹ پروگرامس. پاک یو کے ریلیشنز اینڈ 2005 earthquake of Pakistan. Pakistan was given aid to come out of this disaster. World Donors Conference was held in Islamabad and warm existence with Pakistan was confirmed. Kashmir issue. As dear students, you all know that Kashmir is the bloodline of Pakistan. If Kashmir issue is not resolved, nothing can be resolved between India and Pakistan. But UK's stance is that India and Pakistan have got the task to find a solution, and it is a situation between India and Pakistan. Both of them can solve and resolve the situation. Britain does not take side of any one country. It suggests that the both countries solve this issue mutually. Military relations. My dear students, as you all know that any country that is friend with us will have military relations. In 1955 we signed CENTO, Central Treaty Organization, along with Britain and other countries. This CENTO was the part of the Cold War activity, and CENTO was signed against Russian activity to take over the neighboring states. Dear students, I think you have understood the Pak-Britain relations in a great detail. If you have got any question, you may ask in the group.